my colleague from the DSA, all the participants and their students. It's been privilege for me to be here in competition. It was really a wonderful event to be part of. And first of all, I congratulate both the teams, all the members, that they have excellent job in preparing their case. And if your capacity to address the board at this stage your student is this, then I'm sure that by the moment you complete your law and you will be in the court, in the real time court, you all will be the fantastic advocates in court. So my congratulations once again, and it also requires a big round of applause for all the students. Next, any law which strikes on the fundamental rights, it is very difficult to defend that law, and at the same time it is very easy to argue against the law, because to argue against the law you have a lot of things already right by the Supreme Court of India, the Constitution, like Article 13, for judicial review. There are various judgments, all pronouncements, judgments were in support of team 1, team 5. But it was really a very difficult and challenging task for team 1 to defend the law, which in my first opinion, while going through the Bharatmala this law, is violative of right to privacy. But this team has definitely done a wonderful job, and they have prepared your arguments for excellent. This is not a point to decide in favor of anyone. This is a moot court competition where your advocacy skills are being tested, where your capacity to address the court is being tested, your capacity to handle the questions put forth by the court from the bench is tested, and that you have done quite satisfactorily, wonderful. Few things which I think I must be telling here. First, whenever we are appraising before a court, we should try to be कोर्ट जो है वो पेशेंट हियरिंग के लिए सुबह से हम लोग ऐसे बैठे हैं, शाम के 5 बजे हमारा काम है शांति से सुनना, ठीक है। और हम ऐसे एडवोकेट्स की प्रतीक्षा में रहते हैं जो अपने जो भी उनका आर्गुमेंट्स है, जो भी उनका पॉइंट्स है, उनको शांति से 1 by 1 क्लियरली हमारे सामने रख सके, ताकि हमें एक ट्रू इंसाइट उनका मिल सके, उनका पॉइंट्स क्या है, ठीक है। आप लोगों ने वो बहुत अच्छा किया, परंतु हमें अपने बातों को रखते समय घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, और हमारे पास जो भी लीगल फोर्स है हमारे पास में, ठीक है। इन एवरी केस बीइंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, one party is loser, always one party is loser, one party is winner. In fact, there is not a party loser. It are the facts and the evidences. It is the matter in the case based case, not the party. तो वहाँ पे हमारे पास जिस केस में हमारे पास एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग में अच्छे हैं, उसके संबंध में कोर्ट जजमेंट देता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्वेश्चंस को कोर्ट के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसे कामली शांति से सुनना चाहिए, और उस पर हमें टाइम ले लेना चाहिए। अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमें टाइम लेना चाहिए। एक पॉइंट में थोड़ा सा आपका ध्यान देना चाहूँगा। Throughout your argument, you were excellent, except the point when I was referring to judicial review. आपने कहा कि judicial review तो है, क्योंकि हाई कोर्ट गए थे, तो क्योंकि हाई कोर्ट गया था इसलिए judicial review है, ये लॉ नहीं कहती है। क्योंकि एल चंद्र कुमार का केस आपके इसके द्वारा साइड किया गया। एल चंद्र कुमार केस में क्या था, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, ठीक है। इवन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रेजोल्यूशन पास करते हैं किसी लॉ के द्वारा, तभी उस लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन की कौन टेस्ट करेगा,
बोर्ड टेस्ट करेगा एंड आर्टिकल 13 आपका ये फंडामेंटली कहता ही है। एक तरफ आपने कहा कि हमने अपने सेक्शन 11 से जुडिशियल रिव्यू के पावर को समाप्त नहीं किया है, लेकिन आपका आर्टिकल सेक्शन 11 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली वही बात कर रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। नेक्स्ट, अगर हम ये माने कि आप लॉ में फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो फिर आपने जो प्रेयर किया, प्रेयर में आपने फिर ये कहा कि आपका जुडिशियल रिव्यू जो ऑस्ट है वो ठीक किया गया, उसको अपडेट कर दिया जाए। इट मींस कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जुडिशियल रिव्यू में आप पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करी। एक तरफ आपने कहा बोर्ड में कि जुडिशियल रिव्यू जो हमने ऑस्ट किया है वो वास्तव में ऑस्ट नहीं किया, वो तो है ही, क्योंकि सारी ऑस्ट किया है वो वास्तव में ऑस्ट नहीं किया, वो तो है ही, क्योंकि सारी कोर्ट में रहता है। आपने बताया कि क्या 32 और 226 में रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पावर है ही हमारे पास। बट अगेन इन योर प्रेयर क्लॉज यू प्रेड फॉर ऑस्ट्रेलियन जुडिशियल रिव्यू, दैट इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारे कलीग के द्वारा किया अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, वन कैन नॉट नो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। हम कह रहे हैं कि हमें राइट टू प्राइवेसी चाहिए, हमें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कोर्ट नहीं कर सकती है, और दैट इज नाउ लॉ बाय द कोटास्वामी जजमेंट। अब इससे पहले आर्टिकल 21 की फैसेट के रूप में हम उसे कई बार इंटरप्रेट करते थे, कई बार ये कहते थे कि प्राइवेसी भी उसमें पार्ट है, बट आफ्टर दिस जजमेंट इट इज क्लियर दैट राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो अगर हम राइट टू प्राइवेसी को एडवोकेट करने के लिए आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, तो वहाँ पे आप राइट टू इंफॉर्मेशन किसके लिए, सिटीजन के लिए ना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के पक्ष में कैसे आगे कर सकते हैं हमें राइट टू प्राइवेसी चाहिए। हमारे प्राइवेसी को कोई इंडिविजुअल या गवर्नमेंट या कोई एजेंसी या कोई थर्ड पार्टी कोई ब्रीच ना कर सके। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, हम एक बैलेंसिंग की बात हो सकती है, जैसा आपने कहा कि लास्ट में आपने कहा गया कि जो मोस्ट सेंसिटिव डेटा है उनको प्रिजर्व किया जाए, लेकिन वो एज सच मुझे लगता है कि किसी पॉइंट का वो पार्ट था नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे किसी विषय को हमने कोई मुद्दा ही नहीं बनाया था। हमारा जो पहला मुद्दा था राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, और दूसरा क्या था, राइट टू नो। क्या अच्छा, ये एक पार्ट था। अच्छा, तो आप उसमें जो आपका आर्गुमेंट है वो आप ये राइट टू नो का वैल्यूएशन करता है, इस तरह के पॉइंट हम क्यों रख सकते हैं, हम किसके लिए रखते हैं राइट टू नो। इनफैक्ट जो है जो अभी गवर्नमेंट का एक एक्ट है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट करके, यस, उसका सेक्शन 44(3) है। सेक्शन 44(3) ऑफ दैट एक्ट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट भारत बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट जो हमारे देश का जो काम है, उसका ये सेक्शन कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को हम मना कर देंगे। उसमें वो पहले भी था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके सेक्शन 81J भी प्रोविजन था कि राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन उन केसेस में जो है हम डिस्क्लोज के लिए मना कर देंगे जहाँ पे वो पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट में ना हो। ठीक है, इस लॉ में इसको संशोधित करके डिजिटल डेटा मैनेजमेंट एक्ट 2024 का मतलब उसमें संशोधित करके उसको उन्होंने कर दिया कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा सकती। तो वहाँ से भी इस पोजीशन को ले सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में जहाँ पे हम इस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे वो कर रहे हैं और यहाँ पे ये प्रोविजन नहीं है एक्ट में, इसमें ऐसा नहीं करना कि राइट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या चीज़, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कौन सी चीज़ डिस्कस करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन। बट इट वाज रियली वंडरफुल बिग पार्ट ऑफ दिस जूरी, बहुत अच्छा आप लोगों का आर्गुमेंट था और मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था मार्क्स देने। ठीक है, मार्क्स देना वास्तव में जितना आपको लग रहा होगा कि हम जूरी बैठ के आपको टेस्ट कर रहे थे, बट इनफैक्ट वी बोथ वर बीइंग टेस्टेड बाय यू ऑल। आप लोगों ने सबका प्रेजेंटेशन बहुत ही एक्सीलेंट था, आप तो हमारे साथ भी थी। मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा और अभी करूँगा आपको भी ब्रिज का प्राधिकार से जुड़ना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से ब्रिज का प्राधिकार से जुड़ना। आपको मैं वो रिसर्च देता हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। आप लोग फाइनल स्टूडेंट हो, हमारे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मैं प्रोफेसर बड़ा जी का, मैडम डॉक्टर सबका, तो का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अच्छे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का हमें अवसर
Because initially when this moot proposition was floated, we got 19 registrations. That means 19 multiplied by 3. How many members? So it would have been 2 days event, but ultimately, unfortunately, or maybe because of some engagement of students, and because of that, we postponed this this particular event from 26 March to 2nd of April because of CUT PG exams. And they could not make the memorial and they could not submit the memorial, which is a precondition for to be a part of this event. So, but the ones who have participated, that means they have balanced out their academic and other engagements. That is why they are here with us today. I must appreciate the ones who have participated today. Now, because this is very important to balance, because you need to balance out lot many things, because work-life balance is very important, and they have really balanced out all these things. Now, as far as the event is concerned, preliminary rounds, we were having 6 teams, and out of 6 teams, we have 2 teams in the final rounds. So otherwise, the moot court events, they being organized in different law schools. Preliminary rounds followed by quarters and then semis and then finals. It's not something which is going to be culminated in day one. It is a 3 days event. So mooting is a culture which should be, which should develop, and we promote this culture because this is going to hone your oratory skills. Not only your oratory skills, because we have a team of 2 mooters and 1 researcher. Researcher has a big role to play because whatever we have seen today, आपने देखा होगा जितना भी आपके वो लोग अपने अथॉरिटीज हमारे पास भेज रहे थे, दिस इज ऑल बिकॉज दे हैव डन द रिसर्च. अगर रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो उनका मेमोरियल अच्छा नहीं होगा, एंड they will not be in a position to argue because we have already given them issues. 4 issues दिए थे जिनको दोनों ने अपने तरीके से एड्रेस किया, प्रेजेंट किया. Because winning and losing, it's a part and parcel of the game. So may the best team win, we can say that. And my parameter and my colleagues' parameters, they will be different because I have judged them according to whatever the parameters we have. He has judged them because being holding a certain position. I judge them being an academician. He judged them being holding this particular position. So my viewpoint may be different from his viewpoint. So I say that the team they were balanced because maybe one is good, one is moderate or something like that. But yes, they have participated. That is important because winning and losing it's a part and parcel. So wishing you all the best, and I must say that congratulate to everyone, all the participants who participated in the morning session and the ones who made it to the final rounds. Congratulations to all and best wishes. And I must congratulate the team behind this event, convener and Dr. Vishal Mulegia, and all the research scholars and all the volunteers from first semester, first year, because this event is not for first year, but this is for second and third year, because we wanted them to address first, to witness this event, and so that they can also participate in near future. So all the best, and thank you so much for having with us today. Thank you. Now I would request Professor Dr. A.K. Boraishkar to share his thoughts. I would like to congratulate all the students who have participated in this event, and especially I am very grateful that the senior regional judge, Dr. Alok Ram Tripathi sir, has taken a lot of time, and he has given his valuable time for this activity because judges have very less time, as you must be aware of this fact, but he has spared his time. So really I am grateful to you, sir, and our HOD, Dr. Mamta Rana. She also takes a lot of pain for the department, and along with all the faculties. And convener of this team, Dr. Vishal Mulegia, Dr. and Dr. Mani Mist, and senior advocate Miyaza, and all other participants. Really, it was very interesting to know that we are going to organize this activity of moot court, because that is the main practical work
what exactly you have to do in your future life. So this is very important exercise, as we have already put a lot of stress onto this exercise, that how much practically we can favor to all of you with the basic facility what we have here. But I have seen that most of the students who are taking very actively participate in this activity, and I was discussing with Judge Saab that how was the performance. So he was appreciating that your students are really very good. So this is really a matter of pride for all the faculties of our department, and especially the HOD of the department, and all research scholars and all faculties, and especially the students who are really taking the main advantage of the teaching. Because nowadays the law as a subject, if you will see, this is very important, and really we expect that from the Department of Law SRT campus TV. अगर कोई जज बन रहा है तो he should become the best, कि जिसका नाम हो कि भाई SRT campus से जो जज बने हैं, they are rare of the rarest in the India, at least India में तो वही. और अगर आप advocacy करेंगे, if you are become the advocate, then you should also become the best advocate, so that nobody can raise finger on your faces. क्योंकि आजकल now you must see there are many things are happening. We are not able to distinguish between smoke and money. So that should be the perception, that should be the spirit, that you will be able to strike for the justice. That is the last resort for advocate or हमारे जज साहब. देखो judiciary is a very scientific system, because आज के युग में nothing will be accepted unless you will not prove it. Whether it is a research, whether it is your extraordinary any contribution into the field of the research area, or you can say in science also, whenever we have to do something, then we have to prove it onto the world platform that this is going to happen like this. The same thing is going to happen into the professionalism. So professional activities, and law is itself is a very professional subject. And once you have the knowledge of the subject, when you have the depth of the subject, only then you can advocate this on your part. So once again, I would like to congratulate all the students who have taken participate in this activity, and I hope that you all will be frequently joining such type of activity being organized by the department, so that you will learn the practical experiences. So once again, I would like to thanks to all HOD department, and especially to our guest, जज साहब को विशेष रूप से मैं एक बार फिर से थैंक्स करूंगा that he is sparing time for we all people continuously, and he has told to students to join the DLSA. So I hope the maximum students should join these activities, because there you will learn the practical things. If you will join such activities, and you will learn the practical experience of the different type of problem, what exactly the common man is facing. So really once again, thanks to all, and thanks to all the faculties and research scholars who have taken quite pain to organize these activities. So thank you, madam. Thank you all.